Welcome to School Leadership Academy, SLA, SCRT, JK. We, on behalf of everyone, welcome our guests for best practices as leaders. Today, we have one more guest with us, and who is already the principal, already having the experience of being leader for many years, and now he is serving at the Apex Institute, Diet Birwa, where he is performing as vice principal and HOD of many wings there. Today we'll be talking about partnership practices, how as a leader you can develop partnership with different stakeholders in order to get more results as a leader. So we welcome you, sir, in our academy again, Mr. Shabir Ahmed Khan, sir, who will be talking on this. Thank you very much, Saeed Hamid Saab, for inviting me to this studio for discussing on school leadership qualities among the head of institutions. Thank you. So talking on developing partnership, sir, my first thing I would just go with this, that how to develop the role of different stakeholders for school development, for school results in the field, and for the inputs which we can give onwards as a result, as a reference point for different agencies there in the government. Hamid Saab, you have posed a very effective and very useful question, which we have to use in the field. First, let me tell you that now the concept has come into the existence, that is leadership. Leadership, a teacher is not now the teacher. He is not now the only mentor. He is not only the facilitator. Now he has been associated with a term that is leadership. And I congratulate this department, SCRT, J&K, for for developing this statue, for developing this academy for the leadership. So a teacher is now has to play, head of institution has now play as a role of leader in his or her institution. I mean to say that if we see a teacher is a limited term, it means only to tell the people what to do. Whereas leadership, if we see the function of the leader means to inspire the people to do their job in a better way. Sir, nice, sir. Nice said. I would like to interfere here. If you would quote some of the case studies, like you visited some of the schools, your team visited there, and they did some work there in that area, and have that case study. Maybe that case study would be a guidance for all the teachers there in the field. So would like to listen about those type of case studies as well. Thank you, Hamid Saab. I have near about 32 years experience at my back, and out of 32 years, 20 years I have worked as a lecturer in physics, and 6 years I have worked in the field as principals in one of the school in Kopwara and in other school in Srinagar, Nawakadal Boys Higher Secondary School. And 6 years I have worked in various diets. And during this period, I am proud of myself that I have both the experiences at my back, in field experience as well as the experience of working in the training institution. So by virtue of that experience, I will quote here one of my institution where I have worked as a head of the institution.
rather I should say by their knowledge, by the help of trainings. I have worked there as a HOD and well as leader. One of my best practice I want to share with you and with the audience so that they can also take something from it. That in higher secondary school UNSU, there are a lot of challenges, were a lot of issues, and by the help of my team there, they helped me a lot in order to address all those problems. One such problem was there. One of the boy, he was always sitting in the isolation outside the class, in the garden, and separately, lonely there he remains always. And one of my faculty member, he approached to that boy, and that faculty member, he is nowadays working in this SCRT. Sir, it is a proud for me that the talent is given the appreciation, and also he is given chances to excel in his life. So that one of my subordinate as lecturer there, he came to me, sir, I have a problem in this institution. The boy, he is nearly going to suicide, committed a suicide. So it was shocking to me. Oh, why this is happening? In my institution, such thing is happening. It was a girls' institution, co-institution, boys and girls together. Then I talked to him to what, tell me in detail, what is the problem? So this problem ko hame, it takes us near about couple of days to go deep into the problem. When we talk to the boy, we give that boy a free hand. We worked with him not as a teacher or head of institution, but we worked with him as a parent, as a friend actually, I should say. Then by talking, कहते हैं ना कि talking leads to the resolution. Yes. तो हमने उससे बात की, हमने 2-3 वो अलग बैठा था उसी के counseling, yes sir. So then he told us that I have been ignoring in this institution by some my fellow students. Okay. That means bullying, we should say rather. Fellow students, especially some girl, one of the girl, he has used some abusive language with me. That is why now I am fed up with my life. I am useless. I cannot contribute anything to it. So it is better for me to leave this universe rather by committing suicide. What we did, we call the boy, we counsel him that if those students who are your class fellows, they are going ahead, they are working, they are establishing themselves, and they are accomplishing their job, and you remain out. So it is that means you are giving control to somebody else. The people are controlling you, whereas those people, they are excelling in their life. So it is not good. That means you are surrender. You are weak enough. You are not keeping up. When we see this word, you are weak. You are not countering with them by the argument, by strong argument. So this makes a spark in him. And he said to us that, oh, now I have to do this, I have to go in this way. I have not to get deprived, I have not to get dejected. Rather, I have to counter. Rather, I have to myself excel. I have to show them that I am much more better than that. So by virtue of these things. Thank you, sir. This was nice, sir. One more thing I would like to ask here, that is partnership. That partnership is about school, about parents, and about different stakeholders. And one more process is there when we go for enrollment drive. You look for those partnerships, and this is a triangle. And we have seen your videos and photos wherein you were talking to parents, who are talking to students as well. So your approach, because your direct approach is your school heads and school leaders, those school leaders, they are connected to parents as well, the home, school. This is a partnership. So what made it different for you when you had such type of linkage? How as a leader you worked there? Again, it's a very beautiful question, because in our schools, there is a lack of counseling. And by that lack of counseling to our teachers, our staff, they are not well versed about this counseling techniques and tools and techniques. That is why the students are getting attracted towards our institutions. Then what we do when we go for
this enrollment drive in various zones. In one zone, I would quote here, Badgam zone, I myself went there, and also in Khog zone, we went there, and we talked to the. We bring the teachers, because it is a teaching learning process is a tripolar process. Here there are a number of stakeholders, and we have to, as the head of the institution, as the leader, in order to build this partnership, we have to identify all the stakeholders first, and then to make a common consensus with all the stakeholders, a head of the institution should be a leader, should have a best communication power, motivational power, inspiring power. तो वो हम जब वहाँ पे गए तो what we do, we first identify these stakeholders. उसमें आते हैं सर, सबसे पहले आते हैं पेरेंट्स. हमने पेरेंट्स की बात की है, हमने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ बात की है, हमने टीचर्स के साथ की बात की, हमने डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ बात की है. तो वहाँ पे जब हमने उनके साथ बात की है तो बातों में हमें लग रहा था कि हमारे स्कूल जो हैं, हमारे स्कूल में एक प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चे को वो एक अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं. बोलते हैं जॉयफुल एटमॉस्फेयर वी शुड मेक इन अवर इंस्टीट्यूशन, जॉयफुल एंड एंगेज एटमॉस्फेयर, वो हम नहीं कर पाते हैं. क्योंकि हमारे पास जो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स, तो उनमें ये कमी है. मुझे लग रहा है कि उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इसमें क्या कर. तो फिर हमने वहाँ ऑन स्पॉट उनको ट्रेनिंग दी है, और हमने उनके से बात की है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमने उनको बोला है कि देखिए आपके बच्चे जो हैं ये हमारे स्कूल में आएंगे, हमारे स्कूल में देयर आर सो मेनी प्रोविजंस इन आवर स्कूल. आपके बच्चे, फर्स्ट प्रोविजन इज नाउ दे विल फील देयर सेफ एंड सिक्योर आवर स्कूल्स में. ये प्रॉब्लम, अब आपके बच्चे पे कोई दबाव नहीं होगा. हमारे स्कूल में ऐसे टेक्निक्स हैं. हमारे स्कूल्स में आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है, कोई फी वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है. हमारे स्कूलों में इन एडिशन टू दोज दे आर गिविंग नाउ, वी आर नाउ प्लानिंग टू गिव इन एडिशन टू दिस MDM, we are planning to give your child financial support also, and also the breakfast has been now, it is government is thinking as NEP 2020 is one of the provision there. The child should also be given now this in addition to MDM, it should be given the breakfast, फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो इससे हमने क्या किया, ये उनके साथ डिस्कस किया, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि इतनी फैसिलिटीज हमारे स्कूलों में होते हैं. दैट इज वाई दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस. फ्री यूनिफॉर्म हैं, फ्री बुक्स हैं, तो ये हमने उनको प्रैक्टिकली भी वहाँ पे करवाए हैं, ये चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड किए हैं. तो इसकी वजह से क्या है, हमारे स्कूल में रोल बढ़ गया. यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बेस्ट टेक्निक है, हम हर एक के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी कोई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या टीचर, उसको बोलते हैं IPDE. सर ये कैपिटल है, एक एब्रिविएशन है IPDE. आई मीन सर यहाँ पर यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. अगर आपके स्कूल में रोल नहीं है, अगर आपके स्कूल में बच्चे वो रिटेन नहीं हो रहे हैं, यू आपको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम के बाद है आपको फिर P जो इसमें आता है, P मीन्स प्रिडिक्ट. अगर आपके स्कूल में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से भी आपको क्या नुकसान हो रहा है आपके स्कूल में. बच्चे नहीं आ रहे हैं तो दैट इज नुकसान सर, बहुत बड़ा नुकसान. फिर उसके बाद सर D है, D मीन्स डिसीजन. सर यहाँ पर आपको यू हैव टू मेक नंबर ऑफ डिसीजंस. अगर मैं ये करूँ तो मीन्स प्लान 1, प्लान B, प्लान 3. अगर मैं ये डिसीजन ले लूंगा तो इस डिसीजन से मुझे कितना फायदा आएगा, स्कूल में कितना रोल बढ़ेगा, रिटेंशन कितना होगा, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो प्रॉब्लम है वो कैसे इग्नोर करेंगे हम, वो कैसे अवॉइड करेंगे, टीचर कैसे फील करेगा बेटर इन द इंस्टीट्यूशन. तो सर ये सारे डिसीजन है. फिर इसमें से क्या करना है सर, यू हैव टू चूज द बेस्ट डिसीजन. सो दिस इज लीडरशिप सर. Here we are saying always, sir, God give me the guidance to know what to do and what can be changed, what ought to be changed and what cannot be changed. Give me serenity to live what cannot be changed, and the guidance to take a right decision at right time with grace and dignity, sir. तो यहाँ पे फिर आपको ये decision लेना है, उसके बाद execute फैसला करना है सर. ये Sir, this was nice, sir. As per new document, I would say NEP document or FLN document we do have. And your institute, Apex Institute of yours, that is one of the offshore stakeholders. So this would be better if I ask you rather than to any teacher. So sir, in your district, what were the major initiatives in COVID? Because COVID was there and it was a disaster for the whole world. So what were the major initiatives wherein you linked your institute with teachers and the students, sir? What were those major initiatives, sir? Initiatives. Sir, beautiful. Sir, as you know, we are saying that if there is no learning, there is no life. Yeah, of course. Sir, COVID has, sir, it has halted everything, every institution. So virtually
learning, it makes such a jolt in our education scenario that learning has virtually come to the halt. But due to the, I should say, due to the virtue of this technology, we conduct offline, we keep these online trainings, online classes with the children, we keep it continue. No doubt it has its own weaknesses, it has own drawbacks, impediments, but we have to continue our learning, our teaching learning process with our children. तो ये सर हमने ये कंटिन्यू जारी रखा है ऑनलाइन मोड में. तो ऑनलाइन मोड में हमने बच्चों के साथ भी हम कनेक्ट रहे, हम टीचरों के साथ भी कनेक्ट रहे. तो इस तरीके से हमने ऑनलाइन में ये कंटिन्यू रखने की कोशिश की है. फिर सर जो हमने क्या किया, हमने तो वी फाइंड दैट what is the disease now, how we can be, this can be, we can bring a remedial measures to this. तो सर हमने कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स जो हमें यहाँ से मिले हैं, हमें SCERT से जो हमें एक लिस्ट मिलता है, एक एक्शन प्लान जो मिलता है, उस एक्शन प्लान में हमने देखा प्रायोरिटी क्या है हमारी. तो प्रायोरिटी को हमने देखा है, हमें आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी में देख के हमने देखा है कि एक तो हमने टीचरों को ये ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि हम ये कोविड जो है ये इसको हम कर सकते हैं, we can bridge this gap, this learning gap which COVID has created. एक तो हमने सर वो वाले ट्रेनिंग्स इसमें हमने दिए हैं उनको, वो हमने दिए हैं सर, फॉर एग्जांपल वो हमने दिए हैं हेल्थ एंड हाइजीन, वो एक ट्रेनिंग हमने टीचरों को दी है. हमने दिया है स्कूल एंड सेफ्टी पे भी ट्रेनिंग्स दिए हमने. हम इनको देते हैं सर टीचरों को ट्रेनिंग, हमने इनको अब तो हमने ऑफलाइन भी हमने किए हैं, क्योंकि नाउ विद द मर्सी ऑफ गॉड दिस कोविड हैज़ नाउ बीन टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, नाउ इट हैज़ डिमिनिश्ड. तो हमने ऑफलाइन ट्रेनिंग्स दिए, फिजिकल मोड में ट्रेनिंग दिया अपने टीचरों को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं उनको दिए हैं. तो हमने इनको ट्रेनिंग दी है सर कि ये जो इसको हम बोलते हैं सर इसको कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग्स जो होते हैं सर, ICTE जो उसको बोलते हैं सर, ICT ट्रेनिंग्स हमने दिए टीचरों को. क्योंकि और लर्निंग इनिशिएटिव सर, किसी जगह किसी ने असाइनमेंट्स भी दिए या ऑनलाइन में कुछ दिया या PPTs दी, उन इनिशिएटिव्स पे भी बड़गाम में बहुत काम हुआ. तो सर ये मैं आपको सर यही बोल रहा हूँ कि जो मटेरियल डेवलपमेंट जो है था सर, जो इसको इस वक्त जो मटेरियल डेवलपमेंट है सो हमने वो अपलोड किया है सर, अपनी जो वेबसाइट में डाइट की हैं सर, वो तो बहुत काम आई है हमें सर. तो टीचरों को भी हम एडिशन टू उनको भी हमने सर ट्रेनिंग्स दी हैं, वही ट्रेनिंग्स रिलेटेड टू कोविड, हाउ टू कोप अप दिस कोविड. तो ICT ट्रेनिंग दी, क्योंकि हमारे टीचरों को अभी आता ही नहीं, क्योंकि ये तो न्यू इनिशिएटिव है, इनको ये हैंडल नहीं करना आता था, तो बच्चों तक कैसे पहुँचेंगे. तो इनको हमने सर नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स दी है ऑन ICT. सर अब तो सर FLN जो है सर, आप बोल रहे हैं सर, FLN में सर ये है, इट इज़ अ वेरी एज पर द फील्ड इज कंसर्न, फील्ड रिपोर्ट्स आर कंसर्न विच आर कमिंग टू अस. FLN is very important. So is the fundamental फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सर. इसमें से सर क्या है सर, फाउंडेशन बन जाते हैं बच्चे को कि लिटरेसी क्या है, न्यूमरेसी क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है. सो हमने सर टीचरों को इसमें सर मुझे लग रहा है कि हमने टीचरों को फुली इक्विप्ड, वी हैव इक्विप्ड आवर टीचर्स इन दिस सो दैट दे कैन मेक दिस फंडामेंटल जो लेवल है स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कंफर्टेबल. क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ये इसमें जो FLN में है सर, grade 3 is the inflection point. Grade 3 is that means when the child is at grade 3, if he has not having the apprehension of this learning and numeracy, then he will fall behind sir. He cannot continue his studies because he is not understanding the things. He leave this education process and he becomes a out of school child, and there is a problem. Yeah, one more thing sir I would like to interfere here is about the brain development of child. That's maximum up to 6 years of age, and we have traditional approach there which our leaders were following, that's a syllabus. But as per NEP 2020 and we have document like FLN document wherein there is a pure strategy now, that's of language or that's of literacy and numeracy. So as a DIET faculty member or a DIET HOD leader there in the DIET, what's the DIET strategy in the future, how they will work on this, how they will just guide, they will counsel teachers as well and school leaders in that case, that they don't have to follow the syllabus strictly now, because there is now new strategy wherein they have to make them trained students, teachers as well in literacy and numeracy, and also about their mother tongue, about school language. You have asked a very genuine question. Genuine, I should not say genuine. You have asked the question which the teachers are constantly posing us this question.
When this question as per the NEP 2020, this is not the question. Now syllabus, for textbooks, for these FLN class, foundation classes, this is not at all. This was the traditional concept that student should carry a bag to the school, books, etc. And he should only become the, by doing these things, he gets the skills of rote memorization skills, जिसको हम बोलते हैं rote learning. तो ये rote learning, to do away from with this rote learning, NEP 2020 says there should be no textbooks after the age of, after the class 3rd, I should say class 3rd, when the child is at the age of 8+. 8+ तक बच्चे को ना तो कोई बुक होनी चाहिए, ना कोई सिलेबस फ्रेमवर्क। 8 फिर क्या होना चाहिए सर? फिर टीचर हमें बोलते हैं कि फिर क्या करेंगे हम टीचरों को बोलते हैं कि आपको इनमें डेवलप करनी है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। वो क्या हो गया लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? अगर हम देखेंगे सर, लिटरेसी हम बच्चे को बोलते हैं कि सॉरी टीचर को बोलते हैं कि आपके बच्चे को आना चाहिए सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, दिस इज अ बॉल, दिस इज माई स्कूल, माई स्कूल गार्डन इज नीट एंड क्लीन। इतना ही हम इसको बोलते हैं टीचर को। ये एक आपके बच्चे को जो आपके स्कूल में बैठता है, तकरीबन बैठता हूँ वो 5 प्लस तकरीबन 7 ईयर्स आपके साथ वो रहता है, क्योंकि इसमें है सर फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं FLN क्लास, जो फाउंडेशन ECCE जो होता है, तो उसमें फर्स्ट 5 ईयर्स उनमें रहना होता है अप टू ग्रेड 2, तो फिर उसके बाद ग्रेड 3 हो गया एक और। तो इसको बच्चे को रहना है आपके साथ, रहना है 8 साल तक। 8 साल तक तो बच्चा रहेगा, इसकी एज होगी 11 नियर अबाउट। तो इसमें आपको बच्चे को ये नहीं है रॉकेट साइंस नहीं सिखाना है, सिखाना ही नहीं है, एक बच्चे में डेवलप करनी है क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप करनी है। तो वही दैट मीन्स आपको स्किल्स आर 21st सेंचुरी। उसमें क्या है, बच्चे को एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आपको बच्चे को आना चाहिए। अगर कोई आपको आएगा, आपके स्कूल में आएगा, 3rd वाले बच्चे को पूछेगा व्हाट इज योर नेम, बच्चे को आना चाहिए माई नेम इज सोहेल या माई नेम इज आबिद। जरा बेटा लिखो, उर्दू में लिखो अपना नाम, यहाँ पे मेरा नाम ये है, तो ये बच्चे को आना चाहिए। इसी तरीके से न्यूमरेसी में इसमें इसको हम सिंपली बोलते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए बच्चे को। इसी तरीके बच्चे को आना चाहिए सिंपल एडिशन, 2 + 3 हो गया 5, तो ये बच्चे को आना चाहिए, या 3 - 2 = 1, ये बच्चे को आना, ये नहीं आना चाहिए कि ये तो गोटा नहीं है, इसको कंपैरिजन आना चाहिए। अगर इसको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देने हैं बच्चे को कि इसको ये क्लियर से, यही हम इसको इनको बोलते हैं कि बाकी ये वो हमें बोलते हैं टेक्स्ट बुक, नो टेक्स्ट बुक, नो सिलेबस, सिर्फ लर्निंग आउटकम पे आप फोकस कीजिए। Thank you, sir. This was nice. One more thing I would like to ask, that who are the main people there, who are the main stakeholders who bridged the gap between schools and our apex institutes? As we see in the pandemic, that was disaster for the whole world. And whom you give the credit, who worked hard for 24 hours, who were at back, the resource, who were working in the field. Yes, sir. Here I will let you know that DIT जो होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग्स जो होते हैं, they have only one assignment, that is quality education. They have to provide a quality education to our children. Quality education जैसे अभी हमने बात की है, एक बच्चे में एक अप्रहेंशन आना चाहिए, इसमें समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, तो ये है हमें। तो ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हमें अपने बच्चों को देने के लिए सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सर, डाइट को मैंने बोला, डाइट इट इज़ नॉट ओनली द डाइट मेंबर्स, वी हैव 50 मेंबर्स देयर, आउट ऑफ 50 वी हैव 22 मेंबर्स देयर, 22 जो आर हु आर डीलिंग विद एकेडमिक्स, उनमें से HODs भी आते हैं, 5-6 HODs होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं। तो ये नहीं सर, हम पूरी डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे सर, 10-20 आदमी। तो इसके लिए हमें क्या होता है सर, एक रिसोर्स बैंक होता है हमें सर, एक रिसोर्स ग्रुप जो होता है सर, उस रिसोर्स ग्रुप की भी एक हायरार्की होती है सर, उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। इस रिसोर्स ग्रुप में जो है सर, अगर हम देखेंगे सर, इसमें कितने जोन वाइज होता है सर, हर एक जोन में होते हैं सर, पहले होता है सर DRP सर, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जिनको हम बोलते हैं, उनका एक ग्रुप होता है DRG सर, वो होते हैं 6 होते हैं वो सर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं वो सर। इसी तरीके से फिर होते हैं सर, हर एक जोन में होता है सर एक ZRP, जोनल रिसोर्स पर्सन। तो जोनल रिसोर्स पर्सन के साथ होते हैं सर फिर क्लस्टर रिसोर्स हेड्स होते हैं, CRCs, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन होते हैं। हाँ सर, तकरीबन सब जब हम देखते हैं सर, हमारे जोन में सर बात करेंगे सर, हमें उसमें हमें 13 जोन्स हैं सर,
13 जोन में हमें आते हैं सर नियर अबाउट सर ये 13 मल्टीप्लाई पे आप कीजिए सर 6 एक बन जाता है सर 13 मल्टीप्लाई पे अगर 6 करेंगे तो ये है तकरीबन सर समझिए सर 80-85 तक होते हैं सर ये. So what was their role, sir? हाँ सर यस They सर. were there in the field of I am coming to that. I am coming to that. This group is specially meant for some specific job, sir. Specific job, sir. इनका होता है sir. To is a resource. We call resource, sir. As you are yourself well aware about the resource. It is only the resource which matters the country's GDP. Okay, sir. Thank you. Similar is this resource which matters for the quality education of the district, sir. तो ये क्वालिटी एजुकेशन में हमें सर काम करते हैं सर. ये रिसोर्स ग्रुप जो हैं सर ये देखते हैं सर इनका ये काम होता है कि सर ये देखते हैं कि हमारे जोन में हमारे क्लस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. Why teaching learning is not taking place properly? What problem teacher is facing? Where lies the gap, learning gap? You mean they were at forefront with you when it was pandemic and all those things? Exactly, they give us the feedback, sir. They give us feedback to diet. There's a disease, and the disease it has to be it has to be removed. It has to be remedial support. तो उस remedial support के लिए वो फिर हम उनके साथ प्लान करते हैं सर. वो हमारे साथ आते हैं हम उनके साथ प्लान करते हैं तो फिर सर वो एक they play a big role, sir. Their role is very very big role. If we consider all the teaching training institutions, sir, among all the training institutions, these people they are responsible for giving the quality education. They are responsible, sir. They are doing their job, sir. Betterly they are doing their job for implementation of this NEP 2020. The crux of the NEP 2020 is that our students they should develop their thinking, and they should have जिसको हम बोलते हैं सर brainstorming in our children. And these CRPs and RPs, these groups are helps us a lot, sir. Thank you, sir. They have a very crucial role, sir. Yeah, of course, sir, as per NEP and FLN, well said by you, they are the main stakeholders and they have proved their work also, and they have bridged the gap, and they have bridged the gap. They have just made a bridge between those stakeholders who are there in the school as school heads, as leaders, and they're in the diet, sir. I would like to ask about the synergy. There's a lot of gaps sometimes seen between different apex institutes wherein you see diets, where we see SCRTs, CEO's office, and directorates with respect to the orders. Let me put it like this, sir. We are living in a system, sir. We are not living in the cocoon. We are living in a system, and the education department is also having a system. Systematically, here is a hierarchy, sir. If we see from the ground level, it is a teacher, then it is the HOI, it is the school, then comes community, parents, and ZDO's office. Then comes CO's office, CO, Chief Education Officer, then directorate level, then the commissioner level, and so on. Similarly, sir, in training institutions, we have cluster resource centers, then we have zonal resource centers, we have district resource centers, then we have district institute of education and training, and then, sir, your control, SCRT, and then we say other institutions, sir. We should have a synergy. Only then the schemes, the policies can percolate down to the ground level when there's a synergy. If there lies any gap anywhere, sir, whole system get debacle. That means the implementation part, sometimes we say that is not getting properly implemented. Sir, there is no doubt in the intent of the policy anywhere. Policy are there making by the brainstorming people, the intellectuals, thinkers. But problem lies somewhere when there is not synergy. So that synergy causes up trouble, and that synergy needs to be redressed properly. तो ये हमें सर यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ पे क्या सिनर्जी. तो इंशाल्लाह सर मुझे लग रहा है सर, मैं अपनी डाइट की बात करूँ सर, मैं हमेशा हर एक फोरम में बोलता हूँ कि अब इस वक्त हमारी डाइट में सर बहुत काम हो रहा है सर. बहुत जो भी कोई हमें ऊपर से पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी को हम सर विद इन नो टाइम सर वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी. It is the support of the higher authorities, sir. Means it's a system now. Yes, sir. Diet is not separated there. CO's office is not a separate thing there, and directorate is not a separate. As per you, that is a system, not a cocoon there. Exactly. Cocoons there. So yeah, of course, sir. It was a nice, sir, debate, sir. Sir, your message for the parents or anything you would like to add up in this for the whole society, for parents and other stakeholders, sir. Yes, sir. Sir, we have to work, sir. This department, whole department is for the, sir, development of the child.
holistic development of the child. So इसमें सर आप देख रहे हैं इसके huge exchequer is getting pumped into this department. Only the purpose is that our future, that is a child, he should become the real future. He should work at the global level. He should become the global player. मार्केटेबल सर, उसके लिए काम कर रहे हैं. तो ये उसके लिए काम करने के लिए हमें क्या है, ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पेरेंट हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे स्कूल है, चाहे कम्युनिटी है, और हुसएवर, तो वी शुड हैव टू डेवलप अ ट्रस्ट अमंग ईच अदर. अगर हम बच्चे जब हमारे स्कूल में आते हैं, हमें पेरेंट को ट्रस्ट करना है, नहीं वहाँ पे टीचर हैं, ये टीचर हैं तो ये मेरे बच्चे के लिए काम कर रहा है. और टीचर को भी ये ट्रस्ट करना है कि नहीं ये बच्चा, ये सारे बच्चे अच्छे हैं. दे हैज़, टीचर के लिए एक मैसेज है सर, ही हैज़ नॉट डिस्टिंग्विश द चाइल्ड ऑन द बैक ऑफ SDGE, सोशो डेवलपमेंट इकोनॉमिकल जो ग्रुप जो होते हैं, सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप जो है सर, उसको ये नहीं करना है. सब बच्चों को देखना है दे आर गॉड गिफ्ट, गॉड इज टैलेंट, एंड इज द गॉड, इज द आइडिया ऑफ द गॉड टू ब्रिंग दिस चाइल्ड इन योर स्कूल, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, एंड यू शुड बिलीव दैट गोल्ड लाइज, there's a gold that lies beneath, but every child there lies a talent. So सर ये जो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर, एक तो मैसेज हो गई है, दूसरी मैसेज ये है कि सर तो एक हर एक टीचर को सर ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए सर. मुझे लगता है कि ट्रेनिंग इज सर, यहाँ पे एक शेयर में बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग के बगैर आप टीचरों को अगर आप डिपार्टमेंट में भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे सर, दे विल नॉट परफॉर्म देयर प्रॉपरली, क्योंकि उनमें से एक पॉलिशिंग की, नॉट अबाउट दे हैव नॉलेज, दे हैव एवरीथिंग, बट पॉलिशिंग की ज़रूरी है सर, पॉलिशिंग. तो इसके लिए यहाँ पे एक शेर में बताना चाहता हूँ कि इंसान, बोलते हैं कि इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता रहता है, क्योंकि वो खुश रहना चाहता है, तो मगर वो खुद को नहीं बदलता है. इसलिए मिर्ज़ा गालिब में यहाँ पे एक शेर कहा है कि उम्र भर गालिब ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा. थैंक यू सर. Thank you. Today in our school leadership academy, SNA, SCRT, JK, we had our guest from Diet Bureau, Mr. Shabir Ahmed Khan Sahab, who is the vice principal there, and we are talking about today different stakeholders, different leaders, how they can perform in the field to excel and give learning outcomes and edge. And I hope that next time we will be talking about more things, with more issues, with more problems, and see you next time. Till then, goodbye. Thank you sir. Thank you sir.